Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. It's a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. It's the most important news and editorial of the day that is relevant for both prelims and mains examination perspective will be discussed in this session. Let's get started with the news topic list. Today is 5th of September. The first news, that is Bangladesh PM on a visit to India. This is something very important visit that is made by the Bangladesh Prime Minister, and a lot of issues are aligned to be discussed. Second, Defense Minister to visit Mongolia and Japan. Third, Dark Sky Reserve to come up in Ladakh. Fourth, ISRO test system to recover spent rocket stages. Again, it's a milestone achievement for ISRO. And the last is an editorial. A lot is at the stake of India's Bangladesh ties. Apart from the news and editorial discussion, at the end of this video, there will be MCQ based question, and these questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And before that, if you are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. So starting the session with the first news, that is Bangladesh Prime Minister on a visit to India. This particular news is important for General Studies paper 2 under the topic India and its neighborhood relations. So the Bangladesh Prime Minister is set to begin her 4-day visit at starting from today onwards, at the day she's traveling from 5th of September to 8th of September, right? And the visit will focus on the issues of connectivity, energy, food security, as well as trade and investment opportunities, right? Bangladesh being the immediate neighbor of India, we have a lot of huge potential, right? Considering the fact both countries can mutually be benefited from each other. Now, both Bangladesh and India share a lot of similarities in their culture, economics, languages, political history, and religion. फोकस एरिया ऑफ मीटिंग की अगर बात करें, इस बार जो विजिट होनी है उसकी क्या क्या प्रायोरिटी एरियाज रखे गए हैं, कौन कौन से फोकस एरिया हैं. सो इंडिया एंड बांग्लादेश विल डिस्कस अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इश्यूज which will include some of the prominent issues like setting the land and maritime boundaries demarcations, उसके अलावा security and connectivity, development cooperations, cultural exchange, power and energy, trade and commerce, ब्लू इकोनॉमी और डिफेंस और सिक्योरिटी के जो रिलेटेड इश्यूज हैं वो प्रायोरिटी होंगे. नाउ इंडिया बांग्लादेश की बायलैटरल टाइज के बारे में अगर बात करें, सो द बायलैटरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हैव ग्रोन ओवर द टाइम. सी व्हेन इट्स कम टू एनी ऑफ आवर इमीडिएट नेबर, इंडिया हैज बीन अ प्रोएक्टिव रोल. इंडिया हैज ऑलवेज प्ले अ प्रोएक्टिव रोल वेयर इट वांटेड टू इंश्योर दैट इंडिया इज डूइंग एट इट्स बेस्ट, राइट. तो अगर बात करें बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में, तो ओवर द टाइम जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉपरेशंस है वो एमिकेबल सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ी है, एंड इवन इट हैज फॉर्म्ड द नेगोशिएशन एंड कंसल्टेटिव डायलॉग्स. इवन फॉर द कंट्री लाइक श्रीलंका, जिसको इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इमीडिएट रिलीफ दी, लाइन ऑफ क्रेडिट दी. सो इंडिया हैज़ बीन नोन फॉर द गुड जेस्चर्स टूवर्ड्स इट्स इमीडिएट नेबर्स. Now, since two countries, that is India and Bangladesh, have originated from uninterrupted geographical, historical, and cultural continuum, ये ज़रूरी है that they have shared the resources and concern. The Prime Minister, during his visit to Dhaka, जब इंडिया के Prime Minister Mr. Narendra Modi has visited to Dhaka, he gave boost to the relationship between the both countries. And recent years, several deal has also been reached between two countries where the broad arenas of diplomatic and economies spheres or areas were given due importance. Now, issues of river, ये again एक बहुत ही significant issues है जो कि long pending है between India and Bangladesh. So river is one of the most notable shares resources between India and Bangladesh. कुछ important issues की अगर बात करें, Teesta River is among one of them. I'll discuss that in detail also. एक editorial भी है इस पे, उस पर भी देखेंगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. Now the issues of water management and the waste sharing, water sharing basically, water management और water sharing की अगर बात करें, it is very important that the bilateral cooperation agenda for both India and Bangladesh, they continue to share
54 रिवर्स, अगर बात करें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ये दोनों कंट्रीज 54 रिवर्स शेयर करती हैं साथ। And the two countries have identified 7 of this river development framework for the water sharing agreement as a priority. इन 54 में जो रिवर्स शेयर करती हैं इंडिया और बांग्लादेश, अभी 7 रिवर्स को प्रायोरिटाइज किया गया जिससे वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स होनी है। Now, common major rivers की अगर बात करें, which is common for both India and Bangladesh. So the two countries include Ganga, Teesta. These names are important. आप इसके map work भी जरूर देख लें. The map work related to this is again going to be significant for your prelims examination. So make sure you check the map work. तो गंगा, उसके अलावा टीस्टा रिवर is again very important. मनु, माहुरी, खोवाई, गोमती, डराला, दूध कुमार एंड कुशियारा रिवर। सो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो दोनों कंट्री के लिए सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है। नाउ रिसेंट में मैंने आपके साथ एक न्यूज़ भी डिस्कस किया था जहाँ पे हमने जेआरसी की बात की थी। सो इन रिसेंट बेसिकली द जॉइंट रिवर कमीशन, दोनों कंट्रीज ने फाइनलाइज की है, एक एमओयू साइन की गई है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कंट्रीज ऑन एंट्री वाटर शेयरिंग फॉर द Kushiara river. This river is very important. Map work is very important for the prelims, right? अब river के name जरूर ध्यान रखें। 38 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी जहाँ के इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशन की थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और वहाँ के जो कंसर्न नोडल मिनिस्ट्री उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी और इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू वाटर शेयरिंग वाज डिस्कस्ड एंड सम ऑफ देम इंक्लूड टीस्टास एंड गंगा एज वेल। ऑल थ्रू ये जो जेआरसी की जो मीटिंग हुई है ये आफ्टर अ गैप ऑफ 12 ईयर्स हुई है, which is again a long period. It was although anticipated कि और जल्दी ये मीटिंग होने की जरूरत थी। Now there's a comprehensive economic partnership agreement between India and Bangladesh. So during the upcoming visit of Bangladesh Prime Minister, which she's scheduled to visit India, she's scheduled to reach India today itself. So there's important issues that will be looking into aspects of comprehensive economic partnership agreement, but it also has two frameworks to discuss with the defense corporations. Now, bilateral defense corporations की अगर बात करें, the bilateral defense cooperation come into focus when the Indian Army Chief has visited Bangladesh amid the speculations of Indian weapon could further equip the military forces in Bangladesh, and the defense cooperations between the two countries is imperative, right? जहाँ पे बात करें because of the vulnerability due to the geopolitical stability in Myanmar and uncalled for the provocations of external forces in the northeast. तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी अपने बाउंड्री लाइंस वर्नेबिलिटी के साथ गुजर रहा है, जूझ रहा है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट दैट डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट। सो व्हेन एवर यू आर राइटिंग इन मेन्स, अगर आप इंडिया बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो डिफेंस कोऑपरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। नाउ इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू कॉम्बैट द टेररिज्म इन द रीजन। Now moving to the other important news, that is the defense minister to visit Mongolia and Japan. This is relevant for General Studies paper 2 under the topic effect of policies and politics of developed and developing countries. So the Union Defense Minister, Mr. Rajnath Singh, will mark a 5-day visit. Actually, the total visit is a 5-day. 3-day he'll be visiting to Mongolia and other 2 days in Japan, right? And the aim of the visit is to expand India's defense and security ties with both countries, which include Mongolia and Japan. So Japan, basically अगर बात करें जापान की जो मीटिंग होनी है वहाँ जो डिफेंस मिनिस्टर है, he will join by his counterpart and even the external affairs minister, right? जो external affairs minister हैं, he is also accompanying them. तो ये पूरी जो डेलीगेट है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर की जो जापान जाएगी, दे विल मीट देयर काउंटर पार्ट, राइट? एंड द फ्रेमवर्क फॉर 2+2 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इज ऑन एजेंडा, और उसके साथ साथ जो डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग है उस पर भी बात हुई है। द डिफेंस मिनिस्टर विल विजिट मंगोलिया फ्रॉम September 5th to 7th, that is from today, and his tour of Japan will be from September 8 to 9. These are not important, dates are not important, but just to give you an idea, because कई न्यूज़पेपर में 3 days के विजिट रिपोर्ट किए गए, कई न्यूज़पेपर में 5 days, तो आप इसको दोनों को कैलकुलेट करेंगे, इट विल गिव यू 5 days. Now, bilateral defense engagement with Mongolia की अगर बात करें, the bilateral defense cooperations or engagement with Mongolia has been spanning over the period, right, which include a range of important topics, areas, priority areas. तो कुछ उसमें है joint working group meeting, military to military engagement, तीसरी है high level visits, capacity building and training,
And last but not the least is training of the bilateral exercises. Now, defense ministerial dialogue is a very significant part. So the dialogue is taking place over 5 months after the Japanese Prime Minister has visited India, जो annual summit हुई थी इंडिया में. And the summit was held in New Delhi. The Japan Prime Minister has announced that the investment target of 5 trillion in India for the next 5 years. So huge investment is expected from the Japanese end. 2+2 dialogue की अगर बात करें, 2+2 is a two side that is expected to deliberate on the ways further expanding the bilateral cooperations in the area of defense and security, taking a stock of the countries in the Indo-Pacific. और Indo-Pacific को लेकर के जो क्वाड मेंबर्स हैं उसमें जापान भी शामिल है, तो क्वाड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहाँ पे 2+2 उसको एड करेंगे. The 2+2 dialogue with the Japan will initiate with 2019 to deepen the bilateral security cooperations and further future for the brighter depth. खास करके अगर बात करें स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप के बीच में, तो दोनों कंट्रीज के बीच में 2+2 की डायलॉग स्टैब्लिश की गई ताकि एक ओवरऑल हॉलिस्टिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके. India has 2+2 minister dialogue in the format of basically dialogue, which is very few countries include US, Japan, Australia and Russia. तो इंडिया ने जापान के साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल फॉर्मेट में डायलॉग रखी हुई है. Now, the dark sky reserve to come up in Ladakh. This is again a milestone achievement for India. This is for the first time that this kind of basically state-of-art technology is being shut up. Important for General Studies Paper 3 under the topic Achievement of India in Science and Technology, Indianization of Technology and Development of New Technology. So in first of its kind initiative, the Department of Science and Technology has announced setting up of India's first sky reserve at Hanle and Ladakh in the next 3 months. So almost the work was started way earlier. अब ये completion के time पे आ चुकी है. Hanle, which is about 4,500 meters above the sea level, hosts telescope and is regarded one of the world most optimal site for the astronomical observation. कई astronomical observations जो दूसरी countries के साथ किए गए हैं, नैनीताल में भी एक हैं और ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट बेसिकली सेंटर्स हैं जो इंडिया ने कोलैबोरेट किए दूसरे कंट्री के साथ मिलकर. द क्लाउडलेस स्काई एंड द लो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर मेक इट वन ऑफ द बेस्ट साइट्स इन द वर्ल्ड फॉर द ऑप्टिकल इंफ्रारेड सब मिलीमीटर एंड द मिलीमीटर वेवलेंथ, राइट. सो इफ इट इज बीइंग आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, आप इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Now about the dark sky reserve, this is designated given to the place as had policies in a place to ensure that the track of the local land region and minimal efforts in the light interference is there. और अगर बात करें इंटरनेशनल डार्क एसोसिएशन की, which is a US based non-profit organization, they have designated the international dark place or sky place, park, sanctuaries and reserve depending on the criteria limit. अगर ये criteria fulfill नहीं होती है तो उस लोकेशन को फाइनलाइज नहीं किया जाता है. So this location in Ladakh fulfill all the criteria. Now, several such reserve existed around the world, but none of far in India, right? तो बहुत सारे और भी ऐसे रिजर्व है, बट इंडिया की अगर बात करें तो ये एक ऐसी लोकेशन थी जिसके पास जो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करती है. So this is the actual image. You can see this is the entire setup of the telescope, which is based in Ladakh. So there is a three-way MOU, that is the Memorandum of Understanding that was signed. So 3 organizations has evolved. The first is the Union Territory Administration, right? उसके अलावे जो लद्दाख की Autonomous Development Council है वो, और Indian Institute of Astrophysics जो कि based है बेंगलुरु में, this has signed a 3-way MOU which will use and maintain the telescope for launching of the dark space reserve. So this is again important for examination purposes. Now, promotions of astro-tourism, जिस तरह से eco-tourism और बहुत तरह की tourism को promote की जाती है, तो after the establishment, it will also call for the promotion of astro-tourism in India. According to the director of Indian Institute of Astrophysics, it said that it will promote the astro-tourism, जो village है around लद्दाख के region में, it will be encouraged to promote homestay equipped with telescope that visitor can use to view in the night sky, right? And the villager would also be trained to help visitor with astronomical observations.
Now, the other news, ISRO test system to recover spent rocket stages, something relevant for General Studies Paper 3, that is achievement of India in science and technology, Indianization of technology, and development of new technology. So recently, the Indian Space Research Organization has successfully tested a technology that could cost-effective recover of the spend of the rocket stages and safely land the payouts in the planet, right, to the other planet. Now, इस जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई उसको IAD कहते हैं, दैट इज इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स de-escalator or design and developed successfully testified from ISRO Vikram Sarabhai Space Center on Rohini 300, right? This is again important. इस तरह के factual information आप जरूर ध्यान रखें. Surrounded by the rocket from the Tumba Equatorial Rocket Launching Satellite here on recently. That was done on Saturday itself. Now, ISRO के चेयरमैन ने कहा है कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है will provide a gateway for the cost-effective spend, recover the technology and can also use in the future mission for Mars and Venus. So this is again important. और इस तरह के क्वेश्चंस कई बार प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो जाते हैं. Describing the inflatable aerodynamics de-escalator, it's considered to be a game changer where multiple applications for the future mission from the Bikram Sarabhai Center this way for the first time that IAD, that is the inflatable aerodynamics de-escalator है जो has been designed for spent stage recovery, right? And its name suggests, अगर IAD के बारे में बात करें, it serves as to de-escalate an object plunging down through the atmosphere. So this type of technology advancement will definitely help India and even to a larger extent ISRO कि और innovation state of art technology को incorporate कीजिए. Now moving to the editorial of the day, a lot is at the stake for India-Bangladesh ties, something relevant for General Studies Paper 2, that is India and its neighborhood relations. So the theme of this editorial is basically India and Bangladesh bilateral relations. और बात करें इस editorial की breakup की, I'll be simplifying this editorial by 5 important subheads. The first is the comprehensive economic partnership agreement. उसके अलावा ईस्टर्न इंडिया बांग्लादेश कनेक्टिविटी, शेयरिंग ऑफ वाटर्स, लैंड स्वैप एग्रीमेंट्स और रीजनल जियोपॉलिटिक्स. ऑल्दो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इज ऑन अ विजिट टू इंडिया, मैंने आपके साथ स्टार्टिंग फर्स्ट न्यूज़ भी डिस्कस की. यहाँ पे देखेंगे कुछ और इन डेप्थ और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ कि कैसे दोनों कंट्रीज़ की जो रिलेशनशिप है वो म्यूचुअली दोनों कंट्री को बेनिफिट कर सकते हैं. So Bangladesh Prime Minister is all set to begin her 4th visit to India. She is arriving today itself. And following the conclusion of the 7th round of India-Bangladesh Joint Consultative Commissions, जो JCC की बात करें, which was held in June, two neighbors have expanded their partnership, which include the area of artificial intelligence, fintech, cyber security, startups and connectivity. तो ये 5 कुछ core areas थे जो कि 7th round of meeting हुई थी joint consultative commissions की, उसमें highlight की गई. The trade being the focal point of the Bangladesh during the Bangladesh PM visit, the two countries have geared up for the comprehensive economic partnership agreement or KEPA. The two prime ministers also expected to inaugurate the joint venture power plant soon, right? So they will be also inaugurating the joint power plant. Comprehensive economic partnership agreement की अगर बात करें, so KEPA comes at the time when the Bangladesh is set to lose a duty-free quota market access facility after it will become 2026 में अगर बात की जाए डेवलपिंग नेशंस के लीग में आ जाती है तो जो फैसिलिटीज उनको मिलती थी ड्यूटी फ्री कोटा की वो खत्म हो सकती है. बांग्लादेश इज द 6th largest trade partner with the bilateral relationship ranging from 2.5 billion in 2009 and it has reached up to 10.8 billion. So definitely it's a pride moment for Bangladesh as well that it has to a larger extent it has flourished, right? And Bangladesh import critical industrial raw material from India on which it is export are resilient. Now बात करें वर्ल्ड बैंक की एक रिसर्च पेपर की, उनके मुताबिक बांग्लादेश हैज एक्सपोर्ट कुड राइज अप टू 182 अंडर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 182% से इंक्रीज हो सकती है. And Bangladesh could also improve the several manufacturing industries by leveraging India's एक्सपर्टीज ऑन द सर्विस सेक्टर. तो सर्विस सेक्टर की अगर बात करें बांग्लादेश में काफ़ी अच्छा सर्विस सेक्टर है, टेक्सटाइल में दे पीपल आर डूइंग कमेंडेबली वेल. सो डेफिनेटली टू अ लार्जर एक्सटेंट दिस कंट्री म्यूचुअली विद एग्रीमेंट विद इंडिया कैन बी बेनिफिटिंग.
Now, Eastern India Bangladesh connectivity की अगर बात करें, India and Bangladesh have implemented several projects to boost the Eastern Bangladesh connectivity. और इस प्रोजेक्ट में आशियन और बांग्लादेश विल ओपन रीच बेसिकली जो डोर्स की अगर बात करें इकोनॉमिक प्रोग्रेस की इकोनॉमिक ग्रोथ की तो वो Bangladesh have expressed the interest in joining the India's Myanmar Thailand highway project also. And India and Bangladesh have a bilateral waterways which has a trade with boosted India can now use the Mongolia and Chittagong ports also. Now enhancing connectivity जहाँ पे इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है और बांग्लादेश के जो रीजन है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होगी फॉर द बायलैटरल कोऑपरेशंस. Now country 3 trains express train and international buses operate between India and Bangladesh. Sharing the voters, as I've told you कि एडिटोरियल में कुछ वोटर्स रिलेटेड भी बातें हैं. अगर वाटर इश्यूज की बात करें, the sharing of water that is specifically for the TISTA have remained challenging issues between the two countries since 1947 and still the resolution has not come to any conclusion. So West Bengal में अगर बात करें, TISTA is important to sustain the improvised farming districts में and it comprised 12.7% of their population. And even looking into the Bangladesh aspects, Tista floodplain covers almost 14% of their total cropped areas. Country को ever provide direct livelihood opportunities to almost 7.3% of the population. तो दोनों countries इससे mutually benefit करती हैं. And the countries expect to sign at least 1 year of major river agreement coming up in the Bangladesh Prime Minister visit. तो इस बार की जो विजिट हो रही है उसमें इस पे भी एग्रीमेंट होने की बात है. जो भी डिटेल्स में एग्रीमेंट होंगी विल डिस्कस दैट ऑल्सो बिकॉज इंडिया एंड बांग्लादेश bilateral relationship is specifically for GS paper mains and general studies paper 2 और जो भी बच्चे जिनके PISR ऑप्शनल हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है. Now land swap agreement की अगर बात करें, in 2015 India and Bangladesh have resolved the decade long border dispute through the LSA which is also known as land swap agreement. और गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिव्यू किया सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर के the region of Assam, Meghalaya and Bangladesh tri-juncture which is used for the smugglers, right? And in 2019 India enacted a national register citizen and the citizen amendment which was created in uproar in India and not only in India but abroad also in Bangladesh also. और जो detainees पकड़े गए थे बॉर्डर के एरिया में, they have claimed that Bangladeshi citizen who were returning to the country after failing to obtain Indian citizenship, right? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वीजा एक्सपायर होने के बाद भी वो यहाँ पे रुके हुए हैं. नाउ रीजनल जियोपॉलिटिक्स की अगर बात करें, चाइना को अगर देखें इस एंगल में, जो वैक्यूम इंडिया की तरफ से कहीं भी जो रही है उसको चाइना ने फुलफिल किया. सो चाइना एनरोड इनटू बांग्लादेश हैव बीन अ कॉज फॉर वरी फॉर इंडिया. डेफिनेटली इवन इन फॉर श्रीलंका एंड बांग्लादेश चाइना इज ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट और वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करके भी उस जगह को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है. China has been actively pursuing the bilateral ties with Bangladesh, and Bangladesh have successfully approached China for mega project, including the Teesta River water flow. Again, this is a concern for India. We never wanted that China should enter into our issues, which is between India and Bangladesh. And Bangladesh also required China support for resolving the Rohingya refugee crisis. And Bangladesh is the second biggest arm market for China after Pakistan. तो कहीं ना कहीं चाइना पे डिपेंडेंसी भी है बांग्लादेश की. इंडिया चाहता है कि ये चीज़ें ख़त्म हो और जो एक डायरेक्ट वे ऑफ कॉन्टैक्ट, वे ऑफ डील, वे ऑफ बिजनेस है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में स्टैब्लिश है. दिस इज हाउ द रीजनल जियोपॉलिटिक्स इज वर्किंग बिटवीन द कंट्रीज. नाउ मूविंग टू द MCQ क्वेश्चंस ऑफ द डे. बिफोर आई प्रोसीड, जस्ट टू टेल यू द आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस. फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फॉर सैटरडे क्वेश्चन, सी. फॉर द करेक्ट सेकंड क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन इज ए. Today's MCQ for practice आपको बताना है सो के बारे में. सो इज एन इंडिजियसली डेवलप्ड DRDO रिसर्च सेंटर in collaborations with the Indian Air Force, and it is capable of engaging ground enemy airfield assets, that is radar, bunker, etc. up to a range of 100 kilometers. So do check it out for the correct option. जो बच्चे CAPF के एग्जामिनेशन में अपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट? दिस इज फॉर CAPF एग्जामिनेशन. Consider the following statement about Varuna 2021. This is the 19th edition of Indian-French Navy bilateral exercise, which was conducted in Arabian Sea. And this is for the first time that the United Arab Emirates is participating in the Varuna maritime exercise. So do check it out for the correct option. If you know it's well and good. If not, you have to check for the correct options.
So this was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.